University and did her residency at St. Louis University in Missouri. Welcome, Dr. Malik. Thank you so much for joining us today. Alaikum. Thank you for, giving me the time to present today. So, जी thank you. तो थैंक यू सो मच वैसे तो हमारे साथ डॉक्टर असफर मलिक होते हैं मगर आज आप हमें ज्वाइन कर रही हैं सो आप थोड़ा सा अपने बारे में हम लोग को बता सकती हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में Background, educational background. So I grew up in Karachi and went to Dow. से पहले St. Joseph's Convent में थी. डाउ के बाद फिर यहाँ आई और यहाँ फिर मैंने एक साल रिसर्च की स्लू में सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में एंड देन आई डिड माय रेसिडेंसी देयर और उसके बाद फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में रही डूइंग बोथ inpatient and outpatient. Then I'm triple boarded in adult psychiatry, in consultation liaison, a psychosomatic medicine, and then in addiction medicine. And I have, I do inpatient work. I'm a medical director of addictions, and I have a special interest in mood disorders, women's mental health, and addictions, and PTSD. So Dr. Malik, हम लोग Dr. Asfar Malik के साथ हम लोग discuss कर रहे थे, issues affecting the Pakistani community and the large American community in general about like depression, anxiety, ये सब चीजें. हमने bipolar disorder के बारे में बात करी थी. So you mentioned psychosomatic disorder. तो आप explain कर सकती हैं कि वो क्या है? So psychosomatic disorders, basically, if you look at it, a lot of the medical disorders either are exacerbated by mood disorder या फिर ये होता है जैसे let's say somebody has an MI, so post MI depression is very common. And usually होता ये है कि a lot of the people who have had an MI, if you look back, they could very well have had depression, which could have exacerbated their cardiac condition too. And I'll come to that in a minute. So to treat it is also very important because if you don't treat it, then the chances of them having more morbidity, यानी कि इलनेस जो है वो उतनी सही नहीं रह सकती, उतने प्रोग्रेस नहीं करेगी इफ यू डोंट ट्रीट द डिप्रेशन. इसी तरह से पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन इज वेरी कॉमन. तो लोग कहेंगे कि हाँ बेचारे को स्ट्रोक हो गया तो वो तो डिप्रेस्ड होएगा. नहीं, post-stroke depression is an entity. There's a lot of research done on it, and treatment leads to better morbidity and better participation in rehab and improved functioning. Same thing with major orthopedic surgeries. If they have major orthopedic surgery, depression is very common. Another thing that you will see on the medical floors, कभी होता है कि कोई especially बूढ़ों के साथ या इवन यंग लोगों के साथ पोस्ट कैबेज यानी कि कार्डियक बाईपास डिलीरियम होता है. तो डिलीरियम के सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि जी साइकोसिस है, कोई कह देता है जी डिमेंशिया है. तो वो ये होता है कि डिलीरियम में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, थोड़ी डिप्रेशन होती है, थोड़ा सा उनको ओरिएंटेशन नहीं होती है, एंड इट्स वेरी कॉमन. तो ये चीज़ें डायग्नोज करना, उनको ट्रीट करना. जैसे इफ़ यू हैव एन एल्डरली पर्सन हु डेवलप्स डिलीरियम एंड इट गोज अनट्रीटेड, देन द 6-month mortality and morbidity यानी कि उनकी जो सेहत है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है या फिर उनकी डेथ इट्स हायर. If it's treated, then it's not as high. So जी बोलिए. इसी तरह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, लाइक OBGYN, they see a lot, is a very common illness and it's underdiagnosed. और अब थोड़ी डायग्नोसिस उसकी ज़्यादा हो रही है मगर ट्रीटमेंट जो है ना वो अग्रेसिव नहीं होती है. तो उसमें इस तरह से है कि अब एक औरत है उसको डिप्रेशन व्हेन यू हैव अ बेबी, तो क्या होता है, एक तो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, वो तो थोड़े बहुत होते हैं कि थोड़ा सा थोड़ा सा क्राइंग स्पेल्स हो गई, थोड़ा सा हुआ, दे रिजॉल्व विद इन 2 weeks to 4 weeks.
If the persistent mood state continues, यानी कि आपका डिप्रेशन है, आपको बच्चे को होल्ड करने का दिल नहीं कर रहा है, आप बहुत ही यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, जैसे भाईजान ने पिछली डॉक्टर मलिक ने सॉरी पिछली दफा बताया था। तो वो वाले जितने सिम्टम्स हैं वो होते हैं where the functioning gets affected. So a postpartum depression is actually very important to treat for 2 or 3 reasons. Number one, bonding नहीं होती है बच्चे के साथ, right? Which then can lead to depression in the child. दूसरा ये होता है कि फंक्शनिंग खराब हो जाती है। तीसरा ये है कि इफ यू लीव पोस्टपार्टम डिप्रेशन अनट्रीटेड तो क्या होगा, दैट कैन बी दैट कैन बिकम डिप्रेशन, ठीक है। और फिर सेकेंड एपिसोड ऑफ प्रेगनेंसी में it can exacerbate the postpartum depression state, and we can talk more about it if you have any other questions on it. So these are some of the things that came to my mind. Post breast cancer, there's a lot of data which shows कि जैसे breast cancer हुआ उसके बाद group therapy and treatment of depression has helped survival, 5-year survival rates. So आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बनाया कि after such major surgeries लोगों को जो होती हैं they do experience depressive symptoms, and so it makes sense because it is a very stressful experience that your body undergoes कि आपको literally आप invasion हो रही है आपकी body की, like you're getting surgery done, और लोग इस बात को acknowledge नहीं करते, और ये it's not exclusive just of the Pakistani community, मगर ये है कि बहुत ही बड़ी चीज़ें होती हैं और इनको किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, किस तरह रिकग्नाइज करना चाहिए कि डिसमिस नहीं कर दें कि नहीं इवन विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लोग जो हैं इसको एक्नॉलेज नहीं करते सही से, या नहीं कुछ नहीं होगा ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, लाइक इस तरह बहुत डिसमिसल होता है। तो इसको किस तरह आई थिंक आपके ख्याल में किस तरह फिक्स करना चाहिए या मैनेज तो करना देखिए चाहिए? इसकी आइडेंटिफिकेशन तो 2 लेवल्स पे है ना। सबसे पहले तो मेडिकल कम्युनिटी को करना चाहिए, साइकाइट्रिक कम्युनिटी नहीं, मेडिकल कम्युनिटी को। तो वो अब ग्रेजुअली बढ़ रही है, बट वन ऑफ द थिंग्स वुड बी दैट दे शुड बी एजुकेटेड, करेक्ट। सेकेंडली, इंडिविजुअली अगर आपकी फैमिली में एक औरत है जिसको, लेट्स फोकस ऑन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई थिंक औरत है उसको, सॉरी आई अपोलोजाइज, तो उसको बच्चा होता है तो वो विदड्रॉ कर रही है, शी डजंट वांट टू होल्ड द चाइल्ड, शी डजंट वांट टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, उसको क्राइंग स्पेल्स हो रही है, थोड़ा सा तो पोस्ट प्रेगनेंसी होगा ना आपको थोड़ी सी, मगर शी डजंट वांट टू गेट टू इन्वॉल्व्ड इन द सराउंडिंग्स, आइसोलेट कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे आप फोकस करें। कुछ बहुत दफ़ा बहुत सी ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो जाती है पोस्टपार्टम, कि वो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि वो बच्चे को छोड़ते ही नहीं है, उनको होता है कि बच्चा कोई कुछ कर देगा बच्चे को, किसी के पास ना जी किसी के पास नहीं दें तो दूसरे लोग समझ रहे होते हैं कि ये क्या है भाई, बट थिंक ऑफ इट एज दैट मे बी हर एंग्जाइटी कि बच्चे को कुछ हो जाएगा। कभी इनको जी ये होता है कि बच्चा गिर जाएगा, गोद में जी लिया हुआ है और गिर जाएगा। तो ये है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पोस्टपार्टम जी साइकोसिस, हमारे दैट साथ एक caller है जी, सॉरी अस्सलाम वालेकुम क्या बोलिए, कहते हमारे साथ एक कॉलर है। देखिए, ओ सॉरी, हेलो अस्सलाम वालेकुम बोलिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई कैन यू थिंक हियर मी? यस वालेकुम सलाम बोलिए। जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितने अरसे बाद तक मैनिफेस्टेशन हो सकता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ? और सेकेंडली ये है कि इफ समबडी इज फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर नो ऑब्वियस रीजन, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर दे यूजुअली आस्क यू, अच्छा आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, but if somebody is depressed, like they have all the symptoms of depression, but they can't really pinpoint कि क्या reason है,
why they're unhappy, why they're always lethargic, why they want to sleep more, why they want to cry all the time when the things are going good. So what could be the possible reason behind, what one should do other than taking medicine? तो पहला सवाल तो आपका ये है कि लेट्स फोकस ऑन द पोस्टपार्टम, फिर दूसरा करेंगे. तो पहला है ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैन मैनिफेस्ट अप टू अ ईयर. मतलब इट कैन बी देयर, समटाइम्स इट गोज अनडायग्नोस्ड. तो एंड इफ यू डोंट ट्रीट इट then of course it can continue for as depression or as dysthymia. तो dysthymia जो होता है वो milder form of depression होता है. और depression जो है वो it's like post major depressive episode है which can be mild, moderate or severe. तो वो it can manifest anytime, but it usually starts around 4 to 6 weeks after that. अच्छा, दूसरा आप कह रही हैं कि कोई इंसान है जिसको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं बट यू कैन नॉट फिगर आउट स्ट्रेसर. वो जाते हैं डॉक्टर के पास और वो उनको बताते हैं और वो कहते हैं भी आपको डिप्रेशन है बट देयर इज नो स्ट्रेसर. Am I correct? Is that what you're asking me? Hello? I guess that was the question, correct? Hello? अच्छा, ठीक है. तो उसमें ये है कि डिप्रेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ऑलवेज a psychosocial stressor which will bring it on. It's a biopsychosocial thing. So biological predisposition hoti hai. It depends on your genetic load, correct? So in the same family there can be 2 or 3 siblings and they can have, one can manifest it and the others may not manifest it, or one may manifest like a major episode, the other may manifest a milder and one or two may not. So it's the biological. सबसे पहले तो आपकी genetic loading होती है. किसकी genetic loading कितनी है based on your family history. ठीक है. दूसरा होता है psychosocial. What are the psychological factors and what are the social factors that are affecting it? So based on that, maybe some people just manifest it without even a major psychosocial stressor happening. Or some people may have had a stressor, because for each person, the level of stress that they can tolerate is different. ठीक है ना? We see that in war victims that some people develop PTSD and others don't, correct? So each person has a unique genetic makeup. So that's how it works out. Now your question to कि अगर depression है तो उसके लिए आप दवाई ना लें. It depends too कि डिप्रेशन कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है. ठीक है. बहुत से लोग होते हैं जो माइल्ड डिप्रेशन में दवाई नहीं लेना चाहते हैं और वो कहते हैं हम सिर्फ थेरेपी करेंगे. बट इफ इट इज, you can work with therapy and see. Of course it's a slower process, it will take time. उसमें cognitive behavior therapy works better than just any other kind of therapy. मगर अगर मॉडरेट या सिवियर डिप्रेशन है या कंसिस्टेंट डिप्रेशन है तो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेडिकेशंस एंड थेरेपी विल वर्क, बिकॉज दैट हैज अ बेटर आउटकम. थैंक यू डॉक्टर मलिक. आप थोड़ा सा ये बता सकती हैं, आपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताया, तो आप किस ये क्या है? So cognitive behavior therapy is how you perceive events and how, मैं बहुत थोड़ा सा short उसमें बताऊंगी कि how you perceive a situation and then how you react to it, correct? Alright, so उसमें the way they work with it is that they basically teach you to perceive as like negative thinking को they start to put it simply, usko wo positive, how to think more positive, like looking at the glass half full versus half empty, to put it very mildly in a simple words. Yes. किसी नेगेटिव थॉट को चेंज करने की कोशिश करें और पॉजिटिवली थिंक करें, मगर प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी पड़ती है, like हाँ exercise इस तरह की. हाँ. So you work with a therapist, and the therapist works with you and gives you different, things to do, and you kind of, it's a process because you're wired. Your brain is wired to think of things in a certain way. You have to kind of rewire it, to put it simply. Thank you so much, Dr. Malik. अभी एक टाइम है Mm-hmm. ब्रेक, हम लोग मिलते हैं Mm-hmm. ब्रेक के बाद. Okay. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाजिया मलिक और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं लाइन पे. So, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बोल रहा हूँ जी. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये एंजाइटी होने की वजूहत क्या है? क्या हार्ट की वजह से हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये दिमागी कोई प्रॉब्लम की वजह से है? दूसरा सवाल ये है कि एंजाइटी कौन सी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है? बहुत बहुत शुक्रिया. So एंजाइटी होने की वजह क्या है? तो इट इज लाइक to put it, what comes first, right? There's two things. एंजाइटी जो है वो पहले तो सिम्टम्स तो एंजाइटी के है ना कि आप परेशान रहते हैं, आप टेंस रहते हैं, आप ऑन द एज रहते हैं, आप रेस्टलेस होते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है.
उसकी कॉजेस क्या है। देन अगेन रिमेम्बर मैंने पहले बोला था कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो होती है, ठीक है, फिर सोशल सिचुएशंस होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल मेकअप होता है। अगर आप वैसे देखें तो कमिंग ग्रोइंग अप इन अ फैमिली दैट हैज एंजाइटी, you learn, it's also a learned behavior, ठीक है। तो there are multifactorial reasons for anxiety. Now, does anxiety cause heart condition or the heart condition cause anxiety? Is that what you're asking me? ये पूछ रहे हैं आप? आई थिंक इसी तरह का था कि दोनों हाँ, कनेक्टेड हैं या तो एक difference है। कार्डियक कंडीशंस में सर्टेन कंडीशंस कैन कॉज एंजाइटी, जैसे किसी को अगर एरिथमिया है तो दैट कैन कॉज एंजाइटी, करेक्ट। इफ यू ऑलरेडी हैव एंजाइटी एंड देन यू डेवलप एरिथमिया ऑन टॉप ऑफ इट, देन दैट विल वर्सन इट, करेक्ट। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जिनको पेस मेकर लगता है, तो पेस मेकर की वजह से भी लोगों को एंजाइटी होती है। तीसरा है पोस्ट कार्डियक, नेचुरली किसी को हार्ट अटैक हुआ है, इट्स अ मेजर इवेंट, तो उसके बाद भी एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो कॉमन है। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होगा या आप अपनी दवाई नहीं वक्त से ले रहे हैं, तो वो जो फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द चेस्ट है, वो सब कैन मिमिक एंजाइटी। ऑलराइट, सो रिमेम्बर वन थिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ आजकल जो रिसर्च हो रही है वो हो रही है इन्फ्लेमेशन पे, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज दैट द रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ दीज मेडिकल इलनेसेस इज आल्सो बेस्ड ऑन इन्फ्लेमेशन। तो and they're looking at depression also having some basis with inflammation, ठीक है। तो उस तरह से भी एक इन एक रिलेशनशिप है इसमें। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और सबसे पहला ये है कि आप अपने प्राइमरी केयर से बात करें, ठीक है। और primary care is your first for the women. A lot of times they don't have primary care, they just have OBGYN to talk to them, and it's okay to have डिप्रेशन और एंजाइटी या बाइपोलर। ये कोई ऐसी ये चीज़ नहीं है कि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि भाई कोई पागल थोड़ी है। इट्स नॉट, इट इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, एंड द situations or environment can exacerbate it, right? So it's okay to have it. We feel okay with having high blood pressure or diabetes, so it's okay to have a mental illness too. It's manageable and actually pretty treatable if it's done correctly. तो थैंक यू डॉक्टर मलिक, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया है कि अगेन ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेंटल इलनेस किसी भी फॉर्म की हो, इट्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट। ब्रेन भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है। सो अगेन द वे यू मैनेज, डायबिटीज इज सो कॉमन इन द साउथ एशियन कम्युनिटी कि जिस तरह डायबिटीज को मैनेज करते हैं, जिस तरह हर चीज़ दूसरी चीज़ों को जिस तरह बहुत सीरियसली लेते हैं, इस तरह लेना चाहिए। आपने एक एक और चीज में जी एक चीज मैं सिर्फ इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब आपको कोमॉर्बिड डिप्रेशन है या कोई भी मूड डिसऑर्डर है, इवन बाइपोलर है, the most of those patients then do not take care of their physical health, so that exacerbates your physical health। सही है ना। आपको डायबिटीज है और आपको साथ में डिप्रेशन है या बाइपोलर है, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपनी दवाइयाँ वक्त पे नहीं लेंगे, तो वो उसको एग्जैसरबेट कर देगा, राइट। जब आपका डायबिटीज एग्जैसरबेट होगा, देन द फिजिकल consequences of that is also going to affect your mood, correct, and your anxiety, so it goes hand in hand। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बता सकते हैं कि मूड स्विंग और डिप्रेशन एक ही चीज सेम है? दोबारा बोलिएगा। मूड स्विंग और डिप्रेशन सेम है? Okay,
अच्छा, आप पूछ रही हैं कि मूड स्विंग्स और डिप्रेशन एक ही चीज है। तो मूड स्विंग्स एक बड़ा जिसको कहते हैं ना, ले वेग टर्म है। तो जनरली जब लोग कहते हैं मूड स्विंग्स होती हैं, तो लोग समझते, यू नो, डिप्रेशन जो है एक कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ, एक है सैडनेस। ठीक है, हर कोई सैड हो जाता है, राइट? अब जैसे कि आपका कोई लव वन बीमार हुआ या किसी की डेथ हो गई, तो आप सैड हो जाएंगे, ठीक है ना, नॉर्मल है। ठीक है, ग्रीफ भी एक प्रोसेस है, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट समटाइम। इसी तरह से कोई अच्छी चीज होती है तो आप खुश होते हैं, करेक्ट, दैट्स नॉर्मल। डिप्रेशन जो है एक परसिस्टेंट स्टेट होती है। जब बंदा डिप्रेस्ड, इंसान डिप्रेस्ड होता है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक डिप्रेशन की कैफियत तारी होती है, सैडनेस होती है, उसके साथ एंजाइटी होती है, कुछ करने को दिल नहीं करता है, थकावट लगती है, हर चीज एक बर्डन सी लगती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो इफ यू लुक एट मेंटल इलनेस, हर मेंटल इलनेस के एक, तो जिस तरह से मैं समझाती हूँ कि एक फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, एक इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, और एक कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। तो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना, वो ये हुए जैसे फटीग हुई, भूख नहीं लग रही, नींद सही नहीं है, या बहुत सो रहे हैं, या डिस्टर्ब नींद है। दूसरा ये है कि थक रहे हैं, ठीक है। इमोशनल सिम्टम्स हैं, सैडनेस है, क्राइंग स्पेल्स है। मगर कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब मूड स्विंग्स जब लोग कहते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए कि मूड स्विंग्स क्या है। कुछ लोगों को ये होता है कि जी कुछ दिन तो उनके बहुत ही अच्छे गुजरे, ठीक है, बहुत, दे आर वेरी फोकस्ड, वेरी मोटिवेटेड, हर चीज, सुबह नींद भी उनकी 6 घंटे, एक एग्जांपल दे रही हूँ, 6 घंटे की हो रही है, वो खा भी रहे हैं, वो फोकस भी कर रहे हैं, and everything is going well, then two things can happen out of the blue। या तो वो एकदम से डाउन हो जाते हैं, या फिर कोई एक स्ट्रेसर होता है, बट दैट स्ट्रेसर may not be as severe as their reaction to it, ठीक है। जब इनिश तो वो फिर मोर लीड्स टुवर्ड्स बीइंग बाइपोलर, तो उसकी थोड़ी ज्यादा इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। जी। डॉक्टर मलिक, आपने ये जो आई होप आई questions- आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई होप सो टू। आई थिंक कॉलर ने हैंग अप कर लिया, मगर अगर आपको और कोई सवाल है, तो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो हमारा नंबर है नीचे 1855-886-6387, एक्सटेंशन नंबर 9, अगर आपको कोई कॉल करनी है, इफ यू वांट टू आस्क डॉक्टर मलिक अ क्वेश्चन। आपने अच्छा पॉइंट बनाया कि सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेन, के अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से रेफरल सीक आउट करें या उनसे बात करें। और आप उससे बता सकते हैं थोड़ा सा नेविगेट किस तरह करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लोग इंटिमिडेट बहुत हो जाते हैं कि हाउ डू आई गेट फ्रॉम स्टेप A to B C एंड ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें खुद, अगर ब्रॉडर स्केल पे देखें ना, तो फिर हमें खुद अपने विद इन द, वी टॉकिंग जस्ट अबाउट आवर कम्युनिटी, बिकॉज देखें, एक तो कल्चरली भी हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है ना, मूड डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस की वैसे ही कम है थोड़ी सी। और ये सिर्फ यहाँ वहाँ नहीं है, यहाँ भी है, इफ यू लुक एट इट। और विमेन में थोड़ी ज्यादा एक्सेप्टेंस है कंपेयर टू मेन, करेक्ट। जैसे एक आदमी को गुस्सा आता है, तो वो यही कहेंगे, हाँ नहीं वो तो आदमी है जी, उसको गुस्सा आ जाता है, राइट। मगर दैट्स नॉट नॉर्मल कि खामखाई में गुस्सा कर रहे हैं आप, करेक्ट। तो इस तरह से अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें चाहिए एज कि हम एजुकेट करें कम्युनिटी। तो दूसरा नेविगेट करने में ये है कि बहुत दफा ये भी होता है कि लोग जो है वो घबराते हैं कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, करेक्ट। ये तो यहाँ भी होता है, आपके वेस्टर्न सोसाइटी में जी। भी इश्यूज होते हैं एक्सेप्ट करने के। तो तीसरा ये है कि सबसे, whoever your, अगर आपका प्राइमरी केयर है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका पीडियाट्रिशियन है, अगर आप खातून है, आपका प्राइमरी केयर नहीं है, दे फील मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ वुमन हु इज एन OBGYN, तो उससे बात करें, एंड देन they can either start you on some medication, but remember there's also, remember
इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बाज़ दफ़ा हम ऐसे भी पेशेंट्स देखते हैं जिनको दवाइयाँ मिली होती हैं, तो थोड़ी सी सिम्टम इम्प्रूवमेंट होती है, तो आदमी समझता है कि चलो भाई अब तो ठीक है, मैं पहले से तो बेहतर हूँ, बट पूरी रेजोल्यूशन नहीं हुई होती है सिम्टम्स की। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें आई थिंक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्ले अ रोल। मगर खुद भी अगर आपको लगे कि हाँ मैं थोड़े से बेहतर हुए हैं मगर हम पूरे बेहतर नहीं हुए हैं, then you should think about approaching a psychiatrist, because that is their field and that's what they work on and they have the time, ठीक है ना? So जी। but you approach your primary person, that's the best way, because getting in to see a psychiatrist right away sometimes gets difficult as well. हम्म। और कुछ लोग जो हैं, जैसे आपने मेडिकेशन की बात करी, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बनाया कि कुछ लोग एकदम छोड़ देते हैं बीच में, थोड़े से इम्प्रूवमेंट देखते हैं और सिर्फ मेंटल इन इलनेस की पिल्स, मगर या फिर एक्सक्यूजेस होती हैं कि नहीं नींद बहुत आ रही है इससे, या नहीं मुझे इससे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फॉगी फील हो रहा है, और बगैर कंसल्ट करे हुए ख़त्म कर देते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब दे शुड स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन? नहीं, किसने मना ये करना है ना इसका? करें। हाँ, जी। ये ना करें आप। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब देखें, दवाई तो आप अगर हाई ब्लड प्रेशर की भी दवाई लें, आप किसी भी चीज़ की लें, आप एरिथमिया के लिए लें, आप कार्डियक फेलियर के लिए लें, साइड इफ़ेक्ट्स तो सबके होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। So you have to look at two things. Are you improving? Are these side effects बेहतर हो? कभी कभी दवाई आप शुरू करते हैं तो शुरू में ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, फिर वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद कम हो जाते हैं। तो बी इन टच विथ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड टॉक टू देम। अगर वो कंसिस्टेंटली साइड इफेक्ट्स आपको बॉदर कर रहे हैं, डोंट स्टॉप इट, call them, talk to your healthcare professional, and then they can either switch you to another medication or they can refer you to a psychiatrist who can then, because they have more experience in it, so they can always you know help you out with that. So but always don't stop. Two things can happen. एक तो जब आप stop करते हैं तो you're not giving yourself the chance to get better, और दूसरा ये है कि इस तरह से ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। जब आपने दवाई ली फिर छोड़ दी, फिर दूसरी ली फिर छोड़ दी, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग ईदर। क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मैं मेरा प्रीवियस वर्क था एज अ काउंसलर, फिर ये मैंने देखा था कि कुछ क्लाइंट्स जो थे या फिर अपनी पिल्स फ्लश कर देते थे, या उनको ऐसा लगता था कि थोड़ा सी इम्प्रूवमेंट है और वो लेना छोड़ दिया, और फिर एकदम रोलर कोस्टर की तरह कि एकदम सिम्टम्स अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, और मैनेज करना एज देयर थेरेपिस्ट एंड विद द साइकियाट्रिस्ट वर्किंग इन कंजंक्शन अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो उसमें पता है एक चीज, इफ यू आर अ थेरेपिस्ट or if you are any other healthcare provider who is treating a psychiatric patient, देखिए हम खुद देखते हैं, मरीज होते हैं हमारे पास जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते हैं, ठीक है, बट वो कोई भी मेंटल इलनेस की दवाई थोड़ा सा ठीक होते हैं छोड़ देते हैं। तो उनको फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर तुम ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों नहीं छोड़ते आप, तो वो उन्होंने ये कहना, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं कहा तो फिर अगर आपने मेंटल इलनेस की दवाई छोड़ी तो मेंटल इलनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर कि ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? तो जैसे तो अगर आपने छोड़ दी तो वो फिर से हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि द लॉन्गर यू टेक द मेडिसिन, तो वो डिपेंड करता है कि कितने दिन छोड़ने के बाद सिम्टम्स होते हैं, करेक्ट? जी जी। तो हम लोग की बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। प्लीज़ कॉल, हमारा नंबर है 1855-886-6387, एक्सटेंशन नंबर 9। अभी एक टाइम है ब्रेक का, फिर हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
वेलकम बैक टू माइंड वेलनेस। मैं हूं अनदीप जावेद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाजिया मलिक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉल 1-855-886-6387 एक्सटेंशन 9। डॉक्टर मलिक, हमारे पास एक फेसबुक पे क्वेश्चन था कि कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन? Okay, so I think I mentioned it before too. That sadness is depression is a more persistent state, correct? मुस्तकिल से Sadness जिस मुस्तकिल। is more तो sadness अब जैसे आप यूं कहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि if somebody goes through a divorce, somebody loses a child, that's major issues. Then you deal with grief. Sadness है job loss हो गई, right? या फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं या हेल्थ पे कोई कंसर्न्स हैं, तो नेचुरली सैडनेस होगी, करेक्ट? अच्छा, किसी के कोई बीमार है तो आप थोड़े सैड, नॉर्मल है ना, सैड होंगे, बच्चा बीमार है, ये तो सैडनेस है। Depression is more persistent. It's a persistent state. Sadness, you get over it. You can be sad, मगर you easily kind of कोई पॉजिटिव चीजें होती हैं तो आप उसमें चेंज हो जाता है आपका एटीट्यूड, आपके थॉट्स। और डिप्रेशन में ये है कि आप कॉन्स्टेंटली सैड रहते हैं, कोई अच्छी चीज भी हो रही है तो आपको उसमें वो खुशी नहीं महसूस होगी, आपको कुछ जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए, तो इट्स मोर, टू पुट इट माइल्डली, इट्स मोर परसिस्टेंट। जी जी, कि मुस्तकिल होता रहता है। हम लोग भी बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेशेंट, कि जिसको एक्सपीरियंस, जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मगर जनरली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वेरी टाइट नेट, राइट? फैमिली सिस्टम है कि सब एक साथ रहते हैं या बहुत नेट होता है। तो इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो अफेक्ट होता है उसको कैसे डील करना चाहिए? कि किस तरह के लोग हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा है तो आप उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और अपनी केयर भी कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि फैमिली प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, और मेरा ख्याल में हमारे जो कल्चर की खूबी मैं कहूँगी, विच आई एडमायर, जो विच इज़ ग्रेटली जो अब कम होती जा रही है, इज़ द closeness of the family, because that is a big support system. I'm sure you have seen people in your practice too whose depression gets worsened because they don't have the support. So that is actually a very positive thing in our culture, correct? Community and family, because everybody is there for you. Now, recognition, support देना, ठीक है, उसको समझना कि हाँ भाई इसको डिप्रेशन है, दे गोइंग थ्रू इट, ये नहीं कहना कि ये क्या है, तुम गेट पुल योरसेल्फ अप बाय द बूट स्ट्रैप्स, वो जो है ना कि नहीं क्या है, बेकार बात है, चलो उठो करो, वो करना चाहे भी तो वो डिप्रेस्ड होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, राइट? ऐसा नहीं है, फिर बहुत से लोग उनको कह देते हैं अरे ये लेजी है, हाँ, ये बच्चा लेजी है, या ये जो अर्ली 20s में है, या हाँ हाँ, तो ये या ये, तो वो उनको सपोर्ट देना इज वेरी इम्पोर्टेंट। यू हैव, अच्छा, वो जब अब डिप्रेस्ड होते हैं तो लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं क्रिटिसिज्म से, राइट? इवन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से भी बहुत ही जल्दी वो रिएक्ट करते हैं, दे थिंक कि जी, so so when you have to be a little bit careful when interacting with that. ये तो हो गया जब आपने recognize कर रहे हैं. Then comes the patient. At the second step is a patient that has been diagnosed and is treating. अब उसमें होते हैं, कुछ तो हो जाते हैं, कुछ जैसे आपने कहा दवाई छोड़ दी, फिर से डिप्रेस हो गए, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ये भी है कि तो उसमें आप अपने से वो करें, उसमें यही होता है कि फैमिली यूनिट जो है वो हेल्प करता है, बिकॉज देयर इज मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व. तो इफ एवरीबडी कैन बी इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेट अदर फैमिली मेम्बर्स अबाउट इट. अगर एक आदमी एजुकेटेड है इस चीज़ में और दूसरे नहीं है, वो कह रहे हैं क्या बेकार बात कर रहे हो तुम लोग, ये वो, तो उनको समझाएं, एंड देन
it's a process. Awareness is a process. No, it doesn't happen like overnight. Correct. Awareness जी happens at the community level, at a family level, through programs like you are doing, and programs at the masjids, at the community centers. So those things should be an ongoing thing. और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट रियलाइज करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ कि आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाएं उनसे ओपनली बात करें और फिर Hmm. अपनी केयर करें फिजिकल हेल्थ की भी वो जस्ट एज इम्पोर्टेंट है जैसे मेंटल हेल्थ की और मेडिसिन लेना और इसका आई थिंक जो शेम और स्टिग्मा है उसको ओवरकम करना वो तो खैर मुश्किल है मगर उसको यू हैव टू जस्ट डू इट अपने टेक केयर करने It, के लिए हाँ, सो देखिए मैंने पहले भी बोला था कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर इंटर रिलेटेड करेक्ट. There is बिल्कुल a higher incidence of people who have depression having cardiac illnesses. और मैंने आपको बताया था ना कि inflammation का रोल जो अभी स्टडी हो रहा है and they're working on it. So they जी are both interrelated and we need to understand कि ये दोनों चीज़ें interrelated हैं. इसका ये मतलब है कि आप दोनों को equal importance दें और जैसे कहा brain is part of the body. So it's not like an outside thing, correct? बिल्कुल और फिर लोगों को जैसे सर्विसेज अगर सीक आउट करनी हो तो इस तरह करना चाहिए जैसे हमारी जनरल ऑडियंस के लिए भी कि अगर आप अपने Mm-hmm. पीसीपी के थ्रू करें या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस या आपने जैसे मेंशन करा मस्जिद्स पे भी इस तरह अवेयरनेस अगर करें और इस प्रोग्राम ये इंटेंट है कि लोग गेट मोर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड अगेन कि इतना डॉन्टिंग And नहीं है जितना समझते हैं हाँ, and it is very दो चीज बहुत सोचनी चाहिए कि it is a physical illness just like any other physical illness, but it's a mental illness. It's not a weakness. It is not somebody's attitude. It is something that is also very treatable. करेक्ट. अगर आप डिप्रेशन या बाइपोलर को वक्त पे ट्रीट कर लें तो उसकी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं ओवर द लॉन्ग टर्म are better sometimes than somebody who has diabetes क्योंकि उसकी जो comorbidity even after you treat it is more. So if you treat these and treat them aggressively, to aggressively का मतलब ये है कि सही सही है नहीं कि छोटी सी हाफ डोज से ट्रीट हो रहे हैं थोड़े से सिम्टम्स बेहतर हुए हैं थोड़े से नहीं हुए हैं मगर चलो ठीक है पहले से तो बेहतर है वो. और उसमें जो है वो therapists like yourself will also play an important role because आपके पास पेशेंट आता है वीकली ठीक है साइकाइट्रिस्ट के पास तो वो जाएगा मंथली तो यू are aware of it then you can communicate with the psychiatrist. We feel that they're a little bit better so maybe you can educate the patient, right? So इस तरह से है and maybe if you can get the family and educate the family. So one of the roles that we play as mental health providers is also try and educate the families because they are your helpers outside of your clinic, correct? So बिल्कुल they give you information as well about the patient. और यही मैंने देखा था कि फैमिली के साथ जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो डिनायल में नहीं होते जैसे उनको समझ में आता है कि असली में कोई प्रॉब्लम है तो कितना डील करना Hmm. चाहिए आई थिंक इससे सबसे ज्यादा सक्सेस होता है क्योंकि और मगर Hmm. ऑब्स्टिकल भी कुछ फैमिलीज अगेन ये डिस्कशन हो चुकी है पहले मगर कुछ फैमिलीज जो हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती और उनको लगता है कि नहीं कोई रिलीजियस कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है उसको इसी तरह डील करना चाहिए मगर आप दुआ करके आपकी डायबिटीज नहीं जा सकती यू हैव टू मेंटेन इट थ्रू Hmm. मेडिकेशन diet Hmm. and Hmm. things like that. So similarly, I think education, just having awareness is really important. Huh. Faith has a role to play and it got an important role to play and spirituality in mental health has a lot of there's a lot of stud data on that as well. But that is not the only thing. I mean it's a combination, right? Holistic approach hona chahiye. So, बिल्कुल तो जो हमारी ऑडियंस देख रही है अगर आप लोग याद रखिएगा कि अगेन यू स्टार्ट विथ योर पीसीपी आप जाके कम्युनिटी में किसी से बात करें या कोई बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि किस तरह की सर्विसेज सीक आउट करनी चाहिए
हमारे शो का अब टाइम ख़त्म हो रहा है, so thank you so much Dr. Shazia Malik for Thank joining you. us today. बहुत अच्छी डिस्कशन थी Thank you. और हम लोग फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे. So thank you so Inshallah. much. Please Okay. keep watching Thank our you. show. Please call in. Thank you. Thank you. Bye.